दिस इज द गट का ल्यूमेन वाला साइड, दिस इज द गट ल्यूमेन, दिस इज द साइड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ऑल। यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि ब्लड वेसल ये लोग ने हमें बना के रखा है यहाँ पे। सो बेसिकली वॉट एवर आई एम कंज्यूमिंग थ्रू फूड इज कमिंग इनटू दिस गट का ल्यूमेन। यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे वो सीलिया बना हुआ है, माइक्रोविलाय बना हुआ है। नाउ वी आर हैविंग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, iron in two forms. One is heme iron and the other one is non-heme iron. Heme iron is Fe2 plus. We have already known that Fe2 प्लस है जो इजीली एब्जॉर्ब हो गया, इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, राइट दैट विद रेड, Fe2 प्लस। वेयर जो नॉन हीम आयन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe3 प्लस एंड इट रिक्वायर्स अ duodenal cytochrome B. Just reduce the size of this. It requires cytochrome B for it to be converted to Fe2 plus. जो Fe3 plus था उसको Fe2 plus बनने के लिए duodenal cytochrome B लगता है। And when this conversion is done is when this can be absorbed inside. This absorption is done by dimetallic transporter. So dimetallic transporter is the one that pulls inside ferrous, whereas जो फेरिक है वो डायरेक्टली हीम ट्रांसपोर्टर से अंदर आ जाता है। इट्स अ प्रिविलेज सर्विस बिकॉज इट इज ऑलरेडी फेरस फॉर्म में, whereas यहाँ पे नॉन हीम आयन वेजिटेबल्स एंड ऑल से उसको फेरस में कन्वर्ट होना। ओके, once it is inside this lumen, it will again get converted to ferric का form. So ferric के form में it is again going to be converted, it is going to be kept inside before it being transported into the blood vessels by ferroportin. Now this ferroportin is a very important molecule. I'll be discussing more about it. This ferroportin is going to transport, and this transportation is going to keep it in the blood in the form of ferric form. So ferric form में blood में जाएगा, and blood के अंदर I have something called as transferrin. Transferrin because it is helping transfer iron which is lying freely in the blood. This will go into the bone marrow and will bind to the erythroid receptors in the bone marrow जहां से erythropoiesis होगा bone marrow में, or the excessive part can go to the liver. Liver is going to secrete something called as hepcidin. हेप्सिडिन का काम है फेरोपोर्टिन का काम कम कराना। बेसिकली हेप्सिडिन का काम है कि फेरोपोर्टिन का जो काम है उसको थोड़ा डिप्रेस करना। सो इफ इट इज डिप्रेस्ड, this is also going to be cut off. There is not going to be any iron that is absorbed from the gut into the blood vessels, and this is an indicator that the liver is saying that I have adequate stores of iron inside my body. I have enough of stores that I have, so I don't need any more of iron, so you can stop absorption. So gut is going to stop absorbing it. ट्रांसफरिन का काम है ट्रांसफर करना ब्लड में टू बोन मैरो एंड लिवर. In the liver and in the bone marrow and also in the gut, you can see something named as ferritin. Ferritin is the storage molecule basically जिसमें वो स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा? फेरिटिन। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा? ट्रांसफरिन। सो फेरिटिन के फॉर्म में इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द लिवर, इन द बोन मैरो एंड ऑल्सो इन द गट का ल्यूमेन सेल्स. These lumen cells have a life of 2 to 3 days and they shed off every 2 to 3 days. Just like your hair can shed off after a few days, your skin का cells can shed off after a few days, epidermis का, वैसे ही गट के ल्यूमेन के सेल्स शेड ऑफ एवरी 2 to 3 days, उनका लाइफ स्पैन उतना ही है. सो अलोंग विद दैट ऑल द म्यूकोजल फेरिटिन दैट इज प्रेजेंट, द फेरिटिन दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दैट गट ल्यूमेन इज आल्सो गोइंग टू बी शेड ऑफ, व्हिच फॉर्म्स वो 200 मिलीग्राम हमने पढ़ा था, द 200 milligram that we had read earlier about the gastrointestinal loss that happens ड्यूरिंग एनी प्रेग्नेंट फीमेल और एनी एडल्ट में जो लॉस होता है वो ये गट के सेल्स शेड ऑफ होते हैं उसकी वजह से होता है. एंड अगेन ऑब्वियसली इट इज एन अनअवॉइडेबल लॉस, गट सेल्स को जाने से तुम रोक नहीं सकते. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेगनेंसी? Difference is my body now knows that there is hemodilution that is occurring. I have more RBCs that are forming, and for those RBCs that are trying to compensate for the hemodilution, जो भी RBCs में ज्यादा hemoglobin, I need more of hemoglobin. More of hemoglobin matlab more of iron. So the body understands that in pregnancy I need more of iron so that those more amount being formed in the bone marrow are going to have adequate amount of hemoglobin inside them. So how will the body ensure that more iron is absorbed from the diet? हेप्सिडिन का जो काम था of inhibiting ferroportin, यहाँ पे इसका रोल आता है. Body says, does anyone have any doubt right now? No. Okay. So the body says that pregnancies का state है, I need more of iron. So let us do something. I will reduce the amount of hepcidin that is forming in my body, because once hepcidin का मेरे बॉडी में क्वांटिटी कम हो गया लिवर से, मेरे बॉडी में ऑटोमेटिकली फेरोपोर्टिन के जो रिसेप्टर्स है वो बढ़ने शुरू होंगे. फेरोपोर्टिन बढ़ गया तो आयन का एब्जॉर्प्शन भी ब्लड के अंदर का भी आयन बढ़ेगा, एंड देन आई एम गोइंग टू हैव मोर अमाउंट ऑफ आयन इनसाइड माय बोन मैरो एज वेल फॉर एरिथ्रोपोएसिस.
सो द फर्स्ट थिंग दैट प्रेगनेंसी में होता है वो है हेप्सिडिन का कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी कम होता है. लिवर सेज दैट आई विल हेल्प pregnancy by reducing the amount of hepcidin that I'm forming. Ferroportin, a very important molecule that we have just read. Ferroportin is not just present in the gut cells, it is also present in syncytiotrophoblasts in the placenta. We have all read about syncytiotrophoblasts, syncytio cells, जो multiple cells combine होके they lose their cell wall and they have multiple nuclei. So ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, के अंदर भी होता है ये फेरोपोर्टिन का मॉलिक्यूल. हेप्सिडिन कम होने की वजह से फेरोपोर्टिन बढ़ता है प्लासेंटा में, एंड फेरोपोर्टिन का यहाँ पे काम है टू गिव द आयरन टू द फीटस फ्रॉम द मदर. सो दिस एंश्योर्स दैट फीटस में कभी भी आयरन डेफिशिएंसी ना हो. एंड इवन इफ द मदर हैज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, शी हैज सीवियर अनीमिया, उसका 3 ग्राम% हीमोग्लोबिन है, 3 ग्राम/dl हीमोग्लोबिन है, फिर भी फीटस में 15-16 ग्राम% रहेगा. This is because this ferroportin is over functioning during pregnancy, even in the placenta, that is sucking out every single bit of mother's iron and sending it to the fetus. So the body ensures that the fetus will never have anemia, which is why whenever you are asked, will iron deficiency anemia and will maternal anemia lead to fetal anemia in nutritional anemia or iron deficiency anemia? No, it will never happen so, because the body knows that जितना भी मेरे बॉडी के अंदर आयरन स्टोर्स है वो पहले फीटस को खींच के देना है, प्लासेंटा को बस उतना ही पता है. Which is why maternal anemia कितना भी सीवियर हो, there won't be fetal anemia. That is because of ferroportin, जिसका काम बढ़ता है due to hepcidin का complete suppression during pregnancy.